So yesterday in evening class, I discussed flux of F across C. Two things are there. One was work done, then we did circulation, and then flux. The flux of F, where F is given to you some vector field. Flux means flow. The flux of F across C. C is some smooth curve, simple closed curve. C must be simple smooth closed curve. Simple curve, I told you. A curve which does not intersect itself. Close means the starting and end points are same. So the formula was F dot N ds. Now, N is a vector, F is a both are vector. Dot product of this. This is a flux. While the circulation was C F dot TDS. ये circulation था. So the difference I told you, what is the difference? Circulation is the integral of the tangential component of F, and flux is the integral of the normal component of F, where F is the velocity field, velocity of the fluid will be given to you. So flux is the integral of normal component. Normal component of F, while circulation is the integral of the tangential component of F. It is the difference between these, where F is velocity field. So here N, I told you N, what was N? N was a outward unit normal vector. If you have circulation in X, suppose I am taking X, Y, Z here, and it is in XY plane, circulation is there. Like this, it is closed here. This is closed, this line is not here. It's a simple closed curve. It is like this. So what will happen? Now it is the N, this is tangential. Now this N may be outward, maybe this side or maybe this side. How we will decide it? So it will depend on the motion. If your curve is in anti-clockwise direction, like this, anti-clockwise, you know, then what you will take? You will tangent, this is the tangent, T, okay, and this will be normal. So normal को हम कैसे note करेंगे? So if it is T, you know, this will be K vector in the direction of Z axis. This is your K vector. So this will, how what? जो N vector है, N क्या हो जाएगा ये? T cross K, है ना? This is N. It will be pointing outward. So N की value मैं T cross K लूंगा if your motion is anti-clockwise. And if it is clockwise, if it is clockwise like this, this is circulation is clockwise. This is clockwise C. In this case, some use tangent, suppose it in this direction at a point, and K is same here, this is K. K is unit vector. Then I will take this K cross T. Then this will be K cross T. माइनस साइन का फर्क होगा सिर्फ K cross T. So in anti-clockwise या counter-clockwise direction, counter-clockwise direction, and is this, and in clockwise direction,
एन इज दिस, ठीक है, ये जो एन था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, पॉइंटिंग आउटवर्ड्स ये दोनों में, बस इसमें के क्रॉस टी होगा, इसमें टी क्रॉस के. तो इन जनरल वी टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, you know, so I will be considering t cross k generally. So for anti-clockwise direction, this n vector is t cross k, and t is how much? You know, t was how much? dr over ds. t क्या वेक्टर बताया मैंने आपको? dr over ds है ना, पैरामीट्रिक कर्व का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर पैरामीटर. तो हियर इफ आई एम टेकिंग ऑन द प्लेन, तो r क्या था आपके पास? x को हम gt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, r इज अ कर्व इन xy plane, so you can represent some xti plus ytj. So if you will take t is dr by ds, so dr by ds if I will take, so I can write dx over ds I plus dy over ds j. It is the value of t and cross k. अब जब आप k से प्रोडक्ट करेंगे तो have I cross k, you know this cross product is cyclic, I j k, it is cyclic. So the cross product here, I cross k is how much? Minus j. So minus dx over ds j, and I j cross k is I plus I. So this t cross k will be what? dy over ds I and minus dx over ds j. ये n की वैल्यू निकल आई है ना. I want to find फ्लक्स, फ्लक्स के लिए you have to find this. f आपको r गिवन होगा, उसमें rt रखेंगे, n की वैल्यू हमें निकालनी, तो n I will take t cross k, और t cross k you can calculate by this. This is the value of n. So when you got this, f आपके पास ऑलरेडी था ही. f क्या बताया मैंने? m x y I plus n x y j. It is m which is given to you, the vector field. So f dot n is, so f dot n, इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसमें हम, कितना आएगा देखिए, I dot I1, so you got m dy over ds dy and over ds minus n dx over ds. it is the value of dot n. So hence the flux which was f dot n ds, its formula will become now c f dot n की वैल्यू ये आ गई, m dy over ds minus n dx by ds and dot ds, which you can write c m dy minus n dx. So it is the value, and here I am taking one circle and applying arrow in anti-clockwise direction. So it is showing that flux, this value is coming if I am taking n in the anti-clockwise direction t cross k, and it is the notation of circle with this arrow. क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस टी क्रॉस के या के क्रॉस टी, तो ये इक्वेशन आपकी साइन चेंज हो जाएगा. So this will be coming when you are taking n t cross k and you are considering that this circulation is anti-clockwise direction. So outward you will normal vector this. So it is the value for finding the flux. है ना? Okay? ओके सर. हाँ, ये एरो का मतलब है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इस पे प्रॉब्लम ले लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 917. सॉल्व प्रॉब्लम है फ्लक्स के लिए. फाइंड द फ्लक्स.
of f is equal to x minus yi plus xj across the circle. सर्किल की इक्वेशन आपको पैरामीट्रिक नहीं गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में इन द एक्स वाई प्लेन. Okay, so here flux given to you. First thing is what? Always that the curve should be in parametric form. First thing is what? So you have to write in parametric form. So parametric question क्या है सर्किल की? So cos theta I plus sin theta j. Because it's a unit circle center at 0 0. ठीक है, अगर यहाँ रेडियस 1 नहीं होती तो फिर वो जो रेडियस होती है वो लग जाता है. अगर 2 रेडियस होती मान लीजिए तो हो जाता है 2 cos ti plus 2 sin tj. Because it is 1, so I can write RT is equal to cos t I plus sin tj, and limit of t is 0 to 2 pi, है ना? Because 0 to 2 pi will cover one circle. अगर आप 0 to 4 pi आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रहेगा तो सर्किल ही, but it will give you 2 rounds. Two rounds, yes, sir. So I take one circuit only. So that's why we put this restriction. Now, because I want formula in terms of t, limit हमेशा t में चाहिए हमेशा. Always we are solving, whenever we are solving line integral, we need the limit in t. तो हमें पूरी इक्वेशन को t में लिखना है, ठीक है? So m is given to you here. If you compare your f, so here m is x minus y and n is x minus y. So what is x? X को I will satisfy the parametric coordinates. So this is your xt, this is your y. I put it here. So it is cos t minus sin t, and n is x. X is how much? Cos t. तो फॉर्मूला अगर फ्लक्स का निकाला है, आई नीड dy dx, तो dy dx भी निकालने होंगे. तो व्हाट इज dy? सो dy इज हाउ मच? y is sin t, so dy is cos t The y cos t dt and x is cos t, so dx is minus sin t dt. Now you got all these things. So flux, it is what? C m dy minus n dx, है ना? ये फॉर्मूला, सॉरी n tx, it was the formula, है ना? ये हमने ड्राइव किया था एंटी क्लॉकवाइज. Put the value, so 0 to 2 pi, m is given cos t minus sin t, m dy, so cos t minus sin t into cos t, and dt के साथ लिख देंगे बाहर, minus n, so minus cos t and dx minus sin t, this whole dt. So it will be coming 0 to 2 pi cos square t minus sin t cos t minus plus sin t cos t, and this whole dt. Just cancel out. Cos square t को क्या लिख सकते हैं हम? 1 plus cos 2t upon 1 plus cos 2t cos upon 2. t upon 2. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 2 by 2 and cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है, तो sin 2t and divided by the coefficient of t. 2 से डिवाइड किया, एक 2 ऑलरेडी था, तो Sin 2t by 4. 0 to 2 pi. Its value is coming pi. Okay, so pi is positive. It means कि आपका जो फ्लो था क्रॉस द कर्व इज आउटवर्ड. अगर यहाँ पर नेगेटिव आ रहा होता तो क्या होता? ये फ्लो एक्स जो है आपका वो इनवर्ट होगा. अगर नेगेटिव साइन पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ?
कि हमने जो साइन लिया था वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए सॉल्व किया और पॉजिटिव में आया, तो इट मीन्स कि फ्लक्स इज आउटवर्ड। अगर मान लीजिए साइन सॉल्व करते इसके लिए साइन नेगेटिव आता तो हम लिख देते कि फ्लक्स विल बी इनवर्ड एक्चुअली। ओके, so this is the value, flux is outward, क्योंकि ये फॉर्मूला आउटवर्ड के लिए था और पॉजिटिव साइन आया। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द फ्लक्स। एक्सरसाइज 16.2 है, इस पे यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ऐसे तो आपके उसमें, लेकिन प्रॉब्लम कोई ऐसी असाइन नहीं है, लेकिन जो इस पे प्रॉब्लम्स दे रखी है 38, दैट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट चैप्टर वी हैव 16.4। इसके बाद 16.3 एक चैप्टर था which has been skipped। 16.4 है आपका डायरेक्ट ग्रीन्स थ्योरम। लेकिन जो 16.3 चैप्टर था उसमें एक कंसेप्ट था कंजर्वेटिव फील्ड का, वो मैं बता दूंगा आपको यही 16.4 में थोड़ा सा। 16.4 वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ग्रीन्स थ्योरम। इन द प्लेन, थ्योरम है ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। तो ग्रीन्स थ्योरम कहते हैं एक मेथड एक्चुअली फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेशन, फॉर फाइंडिंग लाइन इंटीग्रल। देखो अगर आपके पास इफ एफ इज कंजर्वेटिव फील्ड, ये कंसेप्ट आपका चैप्टर 16.3 में था, वो आप अगर देखना चाहे देख सकते हैं कि अगर एफ इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, अगर फील्ड आपकी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए क्या होगा कि एफ विल बी इक्वल टू डेल एफ होता है। डेल एफ इज व्हाट, दिस एफ विल बी गिविंग यू सम डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो एफ विल बिकम डेल एफ। ये कंसेप्ट है फॉर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। फॉर मोर डिटेल यू कैन सी योर चैप्टर नंबर 16.3। तो अगर f इज इक्वल टू डेल एफ होता है, तो इस केस में इफ यू वांट टू कैलकुलेट अ लाइन इंटीग्रल f ओवर c ज्वाइनिंग पॉइंट a to b, then this c f dot dr। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको वर्क डन निकालना है तो here वर्क डन विल बी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। मीन्स व्हाट, if your you saw in 16.1 में हमने देखा था that this line integral is path dependent, याद है, लाइन इंटीग्रल इज पाथ डिपेंडेंट। हमने डिफरेंट पाथ लिए थे तो डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी। लाइन इंटीग्रल इज पाथ डिपेंडेंट। देखिए उन्होंने प्रॉब्लम करी थी कि इफ यू आर रीचिंग अ पॉइंट 0 0 0 2 1 1 1, तो अगर हम डायरेक्ट पहुंचे थे थ्रू दिस लाइन सेगमेंट तो द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल वाज कितनी आई थी, 0। और अगर हम पहुंचे बाय दिस पाथ कि पहले हम गए यहाँ से C1 1 1 0 and then along C2, then this C1 union C2 FDR है ना, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, इट वाज समथिंग, सब कुछ और आ रही थी, कुछ डिफरेंट थी। इट मीन्स व्हाट, क्या इफ पाथ इज चेंजिंग दिस लाइन इंटीग्रल इज चेंजिंग। बट इफ योर फील्ड एफ, जो फील्ड हमारा कंसेप्ट चल रहा है, इफ इट इज कंजर्वेटिव फील्ड then in that case it will be path independent। यहाँ पर ये पाथ इंडिपेंडेंट हो जाती है अगर फील्ड कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, तो अगर पाथ इंडिपेंडेंट हो गई तो इफ यू नो द एंड पॉइंट एंड यू नो द फाइनल पॉइंट, तो आप किसी भी कर्व से पहुंचे, किसी भी कर्व से लाइन से पहुंचे, यहाँ पर यू कैन फाइंड ऑलवेज द लाइन इंटीग्रल बाय दिस सिंपल फॉर्मूला एफ बी माइनस एफ ए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो, ये f आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा, तो बाय दिस यू कैन फाइंड एफ बी माइनस एफ ए। कब, जब कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ से फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द फाइन एट इट इज ए इट इज बी सॉरी, तो वैल्यू एट द फाइनल पॉइंट माइनस वैल्यू ऑफ द एंड पॉइंट, फिर इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट।
ये कंसेप्ट होता है। तो वर्क डन यू कैन फाइंड इन दिस वे इजीली इफ योर फील्ड इज कंजर्वेटिव। ओके, ये एग्जांपल ले लें, अगर हम 16.3 के एग्जांपल है ये कि लेट द फोर्स फील्ड F is equal to del F for F x y z is equal to minus 1 upon x square plus y square plus z square। फोर्स फील्ड दे रखा है उन्होंने, F is equal to del F है, यानी ये कंजर्वेटिव फील्ड है। देन फाइंड द वर्क डन by force field F in moving an object along a smooth curve C joining origin to the point 0, 0, 2। ठीक है, अगर फील्ड कंजर्वेटिव गिवन है F is equal to del F and Fx, Yz is this, then find the work done of F is moving an object along the curve। यहाँ पे कर्व आपको नहीं दिया, बस ये कह रहे हैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं हम। देन व्हाट इज द वर्क डन, बिकॉज दिस इज कंजर्वेटिव फील्ड तो आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सॉल्यूशन में कहीं लिख दे रहा हूँ, वर्क डन इज व्हाट सी एफ डॉट डी आर, है ना, इट वाज द वर्क डन। एंड नाउ बिकॉज इट इज कंजर्वेटिव तो इट विल बी सिंपल एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि एफ ऑफ 0, 0, 2 माइनस एफ ऑफ कितना है ये 0, तो यहाँ 1, 0, 0 होता, प्रॉब्लम यहाँ 1 है कि 1, 0, 0 से 0, 0, 2 पे जा रहा है, तो 1, 0, 0 से जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, 0, 0। ठीक है, इसकी वैल्यू आप लिखा 0, 0, 2 रखा, यहाँ पर हमने पास कितना आ गया -1/4 एंड -1, so it is coming 3/4। so when the field is conservative easily you can find this formula। now the point, if it is not conservative then what will it do, if field is not conservative then there we apply this Green's theorem। okay, so we derive a method for computing a work or flux। अब ये वर्क का था, ऐसे फ्लक्स के लिए F.T ds हो जाएगा, और क्या नाम है फ्लो के लिए F.T सर्कुलेशन के लिए, एंड फ्लक्स के लिए F.N। so this formula when your field is not conservative I can apply Green's theorem। so you can say that when F is not conservative, not conservative means that means path dependent, then we apply Green's theorem to convert the line integral into a double integral over the region enclosed by C, ग्रीन्स थ्योरम क्या करेगा, जो सिंगल आपका इंटीग्रल था सी एफ डॉट डी आर, ठीक है, तो कोई क्लोज कर्व को हम क्लोज कर्व पे डिफाइन करते हैं, कुछ इसकी रेस्ट्रिक्शन है जो मैं अभी बताऊंगा थ्योरम में। इसको आई कैन चेंज इनटू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर रीजन क्या होगा, जो क्लोज कर्व रीजन कवर कर रहा है, और यहाँ पर हम सब क्वांटिटी लेंगे उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये लाइन इंटीग्रल कैन बी सॉल्व इजीली बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज द ग्रीन्स थ्योरम। तो somebody may ask कि what Green's theorem do, so what it do, it converts the line integral into double integral and we can solve it easily। okay,
So there are two forms of green theorem, divergence form and curl form. Two concept, two ideas I will be using. One is divergence and one is curl. So, okay, this thing is clear. When we apply Green's theorem, when your field is not conservative and we want to find this line integral, है ना? So there we apply Green's theorem. So it is the advantage. It is the advantage. It can convert line integral to double integral. ठीक है? So here we will using two terms. One is divergence, क्योंकि आपके पास लाइन इंटीग्रल के दो फॉर्मूले थे, एक था टेंजेंशियल वाला और एक था नॉर्मल वाला. So there are two things which I will be using in the Green's theorem. One is divergence and one is curl. ये दो concept है जो हम define करेंगे. So this I will continue on next class. I have some work to do actually. I have to go somewhere at 10. 10 is already there. इसे हम कंटिन्यू करेंगे भाई लेक्चर को डाइवर्जेंस के साथ.